Next lecture of moving charges and magnetism. And the topic is we discuss about the various forces in this. So what are the various forces which we have already discussed? The force on a moving charge placed in a magnetic field. The formula of that force is F is equals to QVB, Q V cross B. We discussed that. So it is a force on a current carrying conductor placed in a magnetic field, right? We have a current carrying conductor placed in a magnetic field B, right? So it is a conductor which is having L length, which is placed in a magnetic field B. Then what is a force? When a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, then the moving charges inside the conductor experience the force, है ना? Due to the Lorentz force. What is that force? Which जो मैंने अभी आपको बताया. Recently, I have told you that Q is equals to F is equals to Q VB sin theta, है ना? कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज करंट कैरिंग कंडक्टर. सो करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ द चार्जेस पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्जेस जो है वो मोशन में है. एंड दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो इसके अंदर इसका मतलब जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जो भी हैं, दे आर इन मोशन. So this magnetic field exert a force on these moving charges. And what is that force? We call that force Lorentz force. ठीक है? That is F is equals to QVB sin theta. It is a magnetic force that exert on the moving charge particle that is placed in the magnetic field. Right? So we have that force QVB sin theta. What is the formula for current? Current is equals to the rate of flow of charges, that is I is equals to Q by T. So I is equals to Q by T. From here we can write the value of Q. ठीक है ना? I is equals to Q by T. We can write the value of Q as IT. And what is velocity? Velocity is equals to length per unit time. ठीक है? It is length per unit time. So the value of Q is IT and V is L over T. We put these two values in this equation. F is equals to QVB sin theta. We put the value of Q IT and V as LT. By putting, after putting the value, what we got? F is equals to IT and velocity length per unit time या displacement per unit time into B sin theta remains as it is. So what is cancel out from here? T is cancel out with the T. What we have? We have F is equals to, ठीक है, F is equals to ILB sin theta या BIL sin theta. ठीक है? So this is an expression for the force that exert on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field B. So in vector form, how we can write it? F is equals to I, ठीक है, I L cross B. ठीक है? So it is a force on a current carrying conductor. F is equals to ILB sin theta. So if we talk about the special cases, what are the special cases? First, if this conductor, this is the conductor, it forms some angle theta, ठीक है, with the magnetic field, कुछ ना कुछ theta angle बना रखा है. If this theta angle, जो L length conductor है, जो magnetic field के साथ जो angle बनाता है, that is sin theta. So if this conductor, current carrying conductor, if the current carrying conductor, if the current carrying conductor is parallel to the uniform magnetic field, uniform magnetic field,
then parallel, that means theta is equals to 0 degree, right? And what is the magnitude to find the force? What is the formula to find the magnitude of the force? F is equals to, it's ILB sine theta, right? ILB sine theta. So F is equals to ILB sine 0 degree, and sine at 0 degree is equals to 0. That's why no force act on it, right? Sine at 0 and 180 degree is equals to 0. So no force act on it. It remains as it is, right? Second case, when the current carrying conductor, when the current carrying conductor is placed anti-parallel to the uniform magnetic field, to the uniform magnetic field, right? That means magnetic field is this uniform magnetic field, and we placed our current carrying conductor anti parallel, यानी कि हम अपने current carrying conductor को anti parallel रख दें, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम रख दें, having L length, flows I current through it. So anti parallel, that means theta is equals to 180 degree, right? Then the force which acts on this current carrying conductor which is placed in uniform magnetic field B is F is equals to, it's ILB sine theta, यानी कि sine 180 degree, ठीक है, and sine at 180 degree is equals to also 0, ठीक है ना, sine at 180 degree is equals to 0. So force, no force act on it. करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 या 180 डिग्री पे है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है. सेम स्पेशल केसेस दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन वी डिस्कस अबाउट द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे भी अगर चार्ज जो है वो पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता चार्ज पार्टिकल इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो भी उसमें फोर्स 0 आ रही थी, बिकॉज दे आल्सो साइन थीटा, ठीक है, एंड साइन एट 0 डिग्री एंड 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 0. So same here, no force act on it, so no work is done. Third special case, when the current carrying conductor is placed perpendicular, ठीक है, L current carrying conductor is placed perpendicular to the uniform magnetic field. At that time theta is equals to 90 degree. So what is the formula for that force? F is equals to ILB sine 90 degree, and sine at 90 degree is equals to 1. That means maximum force exert on that is ILB, ठीक है. अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर में, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, या मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, यू प्लेस द करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू इट, देन मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट ऑन दैट, उस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी, दैट इज ILB, right? So these are the formulas for current carrying conductor, and this force or this principle is used as or used in many electrical appliances like moving coil galvanometer. There we use rectangular coil, but force यही होगी, एक कंडक्टर पे ये फोर्स होती है, रेक्टेंगुलर में 4 हो जाती है, 2 कैंसिल आउट हो जाती हैं, और हमारे पास 2 फोर्सेस रह जाती हैं which are acting in same direction, ठीक है. And also in motor it is used, it is a principle of electric motor and a moving coil galvanometer, ठीक है.
नेक्स्ट, हाउ वी कैन डिटरमाइन, अभी हमने फोर्स निकाला कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज क्यू वी बी साइन थीटा, या फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज आई एल बी साइन थीटा. But what are the different rules or laws which are used to determine the direction of this force? So what we have Fleming's left hand rule. Direction of force on current carrying conductor we can determine by the Fleming's left hand rule. ठीक है, Fleming's left hand rule. What does it states? If we stretch our hand in such a way that the thumb and the first two fingers are mutually perpendicular to each other, and thumb points in the direction of force or the motion of the conductor, and this first finger, index finger, points in the direction of magnetic field, and this middle finger points in the direction of velocity vector or the current. तो इस current की direction को show करता है. How we can remember it? Father, mother, child. Yesterday also I told you कि father, mother and child. Force, magnetic field and the current. ठीक है, father, mother, child. So we can find this if suppose we also do one question over it. हमने इसका एक question भी किया था in the previous classes कि if the magnetic field goes into the screen या into the paper, ठीक है, and the current goes up, कंडक्टर हमारा 90 डिग्री पे है, इस तरीके से ऊपर है, then force acts in the west direction. So this shows the magnetic field. अगर magnetic field into the page या into the screen जाता है, it is represented by क्रॉस. ठीक है, इनवर्ड्स अगर है या इनटू द पेज है या इनटू द स्क्रीन है, और अगर आउटवर्ड है सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. ठीक है, दिस इज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. नेक्स्ट वी हैव अ न्यूमेरिकल. A current of 1 ampere flows in a wire of length 0.1 centimeter in a magnetic field of 0.5 Tesla. Calculate the force acting on the wire when the wire makes an angle of 90 degree and second 0 degree with respect to the magnetic field. ठीक है, so we have the value of current as 1 ampere, length 0.1 centimeter, that means 0.1 into 10 raised to the power minus 2. ठीक है, मीटर, यानी कि टोटल हो जाएगी 10 raised minus 3 मीटर. Then magnetic field we have 0.5 Tesla. We have to find the force. In first case, theta is equals to 90 degree. So we have a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. What is the formula to find that force? ILB sin theta. So apply that. F is equals to ILB sin theta. So current we have 1 ampere, length we have, ये हो जाएगा 10 raised to power minus 3. ठीक है, एक और माइनस चला जाएगा ऊपर, 10 raised to power minus 3 मीटर. So 10 raised to power minus 3 meter. Magnetic field 0.5 and theta is 90 degree, and sin theta, if it is 90 degree then it is equals to 1, यानी कि maximum force exert. Then F is equals to कितना आएगा? इट्स 5 10 raised to the power minus 4 न्यूटन. ठीक है, इसका एक पॉइंट भी ऊपर चल जाएगा पावर. ठीक है, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, राइट. नेक्स्ट वी हैव सेकंड पार्ट, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. सो फॉर्मूला विल बी सेम. F is equals to ILB sin theta, sin 0 degree, and sin 0 degree is equals to 0. ठीक है, so force is equals to 0. No force act on it if the current carrying conductor is parallel to the uniform magnetic field, right? So this is how we can find the magnitude as well as the direction with the Fleming's left hand rule of the current carrying conductor placed in a uniform magnetic field, right? नेक्स्ट वी हैव, अभी तो हमने किया
कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, वन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then force exert on it is F is equals to ILB sin theta, right? If we have two parallel current carrying conductors, the direction of current may be same or may be different. So what is the magnitude of the force act between them, and what is the polarity? It may be repulsive or attractive. So look, in this diagram, there are two parallel current carrying conductors having the same direction. दोनों में current की जो direction है वो same है, right? So when we use what are the different rules we use to determine the direction of magnetic field? एक तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, दूसरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अभी हमने यूज किया था, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है? सो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज करें, सो दिस गोज अप करंट की डायरेक्शन एंड इन दिस, ठीक है? यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है? ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया, इन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर ऊपर की तरफ, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से इंटरेक्ट करेगा आउटवर्ड. सो हियर वी रिप्रेजेंट इट बाय द डॉट एंड हियर वी रिप्रेजेंट इट बाय द क्रॉस, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट इंटरेक्ट्स विद दिस, ठीक है? और इसका जो this conductor, right? Understood now? How this become how the force act? ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड B होगा, ठीक है? विच इज आउटवर्ड, यानी कि इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है? आउटवर्ड है करंट, इस तरीके से आउटवर्ड, राइट? और इसमें इस तरीके से अंदर की तरफ. सो इन दिस ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, ठीक है? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इंटरेक्ट्स, ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड है ये सेकंड कंडक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है? हाउ? I2 करंट कैरिंग कंडक्टर, सेकंड वाला जो है इट हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड होगा जो B2 होगा. दे इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, राइट? सो दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इंटरेक्ट विद दिस मैग्नेटिक फील्ड. अभी बात की थी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, किसके? फर्स्ट के, B1 के. यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट ना, कि करंट कैरिंग कंडक्टर है सेकंड, ये वाला, ठीक है? दिस इज अ सेकंड, दिस इज अ फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर को वी प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है? और फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा है सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड में. तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो दूसरे कंडक्टर का होगा, ठीक है? एक कंडक्टर को दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, देन व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, वो उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड्स which interact with each other, so they have some force between them. It may be of repulsive nature and it may be of attractive nature depending on the direction of the current between the two conductors, ठीक है? So what is the direction of the current? If the direction is same, ठीक है, first we find the we use the Fleming's left hand rule या right hand thumb rule to determine the direction of magnetic field, ठीक है? So the force किस तरीके से होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है इसमें, बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है? सो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, वी यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट. मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट गोज अप, I1 जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में. तो ये जो फोर्स होगी ये कहाँ आई? टुवर्ड्स दिस कंडक्टर, ठीक है? सिमिलरली इन दिस केस आल्सो, यहाँ पे क्या हो रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ गया, करंट ऊपर तरफ, फोर्स दूसरे कंडक्टर की तरफ. सो वी कैन सी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम इन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स,
then forces attract towards each other. Forces क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ डायरेक्शन होगी उनकी, they attract each other. And in this case when the direction of current is opposite, इसमें डायरेक्शन जो है करंट की ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन जो है करंट की वो नीचे की तरफ है. तो अगर हम यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट, इस केस में करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड. इन दिस केस ऑल्सो करंट, इसमें करंट कहां जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो कम्स आउटवर्ड. सो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, द करंट गोज अप, ठीक है, करंट गोज अप, देन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, इनवर्ड्स होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड. करंट गोज अप, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट गोज डाउन, मैग्नेटिक फील्ड गोज इनवर्ड्स. हाँ, अंदर की तरफ होगा दोनों में, which is represented by cross, ठीक है. In both the conductors, in this case when the direction of the current is opposite, then the magnetic field goes into the screen या into the page, which is represented by cross. Understood? So we use Fleming's, you can use right hand thumb rule or Fleming's left hand rule to determine the direction of magnetic field, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए आप दोनों रूल यूज कर सकते हो, but to determine the direction of force you have to use Fleming's left hand rule. So this is Fleming's left hand rule. The magnetic field इनवर्ड्स अंदर की तरफ जा रहा है, करंट इसमें फर्स्ट कंडक्टर में अपवर्ड, सो फोर्स बाहर की तरफ आएगी, ठीक है. इन दिस केस वी ऑल्सो यूज द सेम, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बट करंट नीचे की तरफ है, ठीक है ना. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट जो है वो नीचे की तरफ है एंड फोर्स इस तरफ. अंडरस्टूड ना, इस तरीके से है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर, करंट नीचे की तरफ और फोर्स होगी इन दैट डायरेक्शन, ठीक है. सो इन दिस व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट इन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, देन द फोर्सेस रिपेल ईच अदर, दूसरी एक दूसरे दूर फोर्सेस जा रही है, ठीक है. तो ये तो होगी डायरेक्शन करंट. इफ वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, सो consider two parallel current carrying conductors having L length each, ठीक है. If the direction of first case, if the direction is same, if they have same direction of current, then by using Fleming's left hand rule we determine the direction of magnetic field and the force, ठीक है, between them, ठीक है ना. तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड अराउंड उसके क्रिएट होगा, सो वो मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड थंब रूल से डिटरमाइन कर सकते हैं एंड द फोर्स बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट. सो our current carrying, what is the force on the current carrying conductor placed in a magnetic field? Force on a current carrying conductor placed in the uniform magnetic field. So F is equals to ILB sin theta. Now you look,
कि ऑन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज इट इज 90 डिग्री, ठीक है। कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड पे एंगल है ऑन दिस, ठीक है, एल लेंथ का जो मैग्नेटिक फील्ड पे एंगल है इट इज 90 डिग्री, ठीक है। फोर्स बिटवीन एल एंड बी इट इज 90 डिग्री, सो वी कैन राइट साइन 90 डिग्री, right? So one conductor is placed in a magnetic field of the another conductor. So we can write magnetic field as B2. Okay. Just wait. So F is equals to we have current. If we find F12, that means force on the first conductor applied by the second conductor, ठीक है, फर्स्ट जो सेकंड पे अप्लाई कर रहा है। सो फोर्स ऑन द फर्स्ट कंडक्टर अप्लाइड बाय द सेकंड कंडक्टर, तो फोर्स जो है वो फर्स्ट कंडक्टर पे लग रही है। तो फर्स्ट कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I1, L इज द लेंथ एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसको, सेकंड कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द फर्स्ट कंडक्टर, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है, इट इज साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1। तो F12 व्हेन वी हैव टू फाइंड द फोर्स F12, दैट मींस force on the first conductor in which I1 current is flowing and having L length which is placed in the magnetic field of the second conductor, and they have some theta angle between them which is 90 degree. So sin at 90 degrees is equals to 1, right? So this force, how we can write, F is equals to F12 is equals to, if we took the scalar form only, ठीक है, please wait. So as you know कि मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स में होगा। सो दीज कंसेंट्रिक सर्कल्स वी टुक दैट केस कि हमने व्हेन वी डिस्कस अबाउट द बायट-सैविट लॉ एंड द एम्पीयर-सेक्टर लॉ, तो हमने केस किया था कि in case of a straight current carrying conductor the magnetic field at the middle में magnetic field कितना था, it's mu naught I upon 2 pi r, right? So we put the value of magnetic field, वो वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। So we put the value of B magnetic field कि mu naught I upon 2 pi r, that case जिसपे हम straight current carrying conductor लेते हैं and the magnetic field and the center in the middle of the straight current carrying conductor, ठीक है। Is refreshing, wait. ठीक है, so I1 L what we write instead of B को हम क्या लिखेंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का वो वाला केस जिसमें स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के हम मिडल में एक पॉइंट है which is r distance apart and we have to find that magnetic field on that P point due to
दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. सो बी की जगह हम लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन इट्स 2 पाई आर. ठीक है. एंड व्हाट इज अ करंट? ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है, तो I2 करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ. सो वी राइट दैट. ठीक है. क्या हमने लिखा है? हमने B2 को लिखा है क्या? B2 in the just straight wire, a straight infinite long current carrying conductor. So ये उसका केस है. It's mu naught I upon 2 pi r. This is a formula. और करंट सेकंड कंडक्टर का करंट है, सो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये रखी. सो व्हाट इज अ मेन पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर कि I1 कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है वो B2 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है, और B2 मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? I2 करंट की वजह से है. ठीक है. सो रीअरेंज दिस इक्वेशन. इट्स म्यू नॉट I1 I2 L over 2 pi r. ठीक है. So mu naught I1 I2 L over 2 pi r. This is the force between two current carrying conductors. ठीक है. तो इसमें दोनों करंट होंगे, L होगा. फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम यहां ला सकते हैं, बाकी सब चीजें वहां रहेंगी. ठीक है. सिमिलरली इफ वी हैव टू फाइंड F21 अगर हम फाइंड करेंगे तो करंट ऑन द सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर, यू हैव टू राइट ऑल द लाइंस जितनी भी हो सकती है पॉसिबल. सो करंट ऑन द सेकंड फोर्स ऑन द सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन द सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर. सो ILB sin थीटा. ठीक है. दैट एंगल इज 90 डिग्री एंड इट्स B1 की वजह से सेकंड कंडक्टर पे फोर्स लग रही है. सो F21 इज इक्वल्स टू, और ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर कौन सा है? सेकंड है. सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर पे हम फोर्स निकाल रहे हैं ड्यू टू 1. तो सेकंड करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि I2 करंट फ्लो कर रहा है सेकंड में, L लेंथ का है, लेकिन किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा है? फर्स्ट करंट कैरिंग कंडक्टर की. सो I2 L, B की हम वही वैल्यू पुट करेंगे. B1 स्ट्रेट केस, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफाइनाइट. इन द मिडल ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके मिडल में एक पॉइंट P है विच इज R डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम दिस करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग L लेंथ. ठीक है. सो म्यू नॉट I1 upon 2 pi r. This is the value of magnetic field which we put from here to in this equation. So it's mu naught I1 over 2 pi r and sin 90 degree is equals to 1, right? So F21 is equals to, rearrange it, mu naught I1 I2 L over 2 pi r. ठीक है. I1, it is I1, it is I2 L and mu naught over 2 pi r. So this magnitude I12 F12 and F21, you see it is same. ठीक है. The magnitude in both the current carrying conductors is same if they have same current flowing them. And what about the direction? अभी हमने बात की Fleming's left hand rule से. If they have the same direction of the current, then the forces attract each other, and if they have opposite direction of the current, then the forces repel each other. So you have to visualize the picture. ठीक है. तो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, that is F12 is equals to F21. ठीक है. What you have to remember by the direction, if the direction of current in both the conductors is same, then the forces attract each other. ठीक है. Then the forces attract each other. And second, if the direction of the current in both the conductors is opposite, when they have opposite direction of the current in the both current carrying conductors,
then forces repel each other. ठीक है, repel each other. तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं दे आर नेगेटिव, उनके हम आगे नेगेटिव साइन लगा देते हैं, दैट मीन्स दे आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, एंड इफ दे आर रिपल्सिव फोर्सेस दैट मीन्स दे आर पॉजिटिव फोर्सेस. अंडरस्टूड? So question last to last year maybe question may be asked from this, if they have same direction then the forces attract each other, if the opposite direction then repel each other. Some like indirect question may be asked कि आपको ये बोला जाए कि there is a beam of electron and the proton flowing in the two parallel conductors. So what is the magnitude, मतलब कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड दिया जाएगा, या फिर what is the direction of that current. ठीक है, ये पूछा जा सकता है. What is the question? कि there is beam of वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी बोला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स भी बोला जा सकता है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स भी बोला जा सकता है. So beam of electron and proton flowing through two parallel current carrying conductors. ठीक है, so we have two parallel current carrying conductors. एक में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन अगर उधर मूव कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, और इट इज ऑल्सो गिवन फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन. आपको डायरेक्शन भी बताई जाएगी, वो अपोजिट भी हो सकती है, वो सेम भी हो सकती है. So you have to firstly carefully read the question which is asked, what is asked in the question. So accordingly you have to draw the diagram. ठीक है, so electron and proton are flowing suppose in the vertically upward direction in the conductor. So you know कि electron, how we remember the electron as a शैतान बच्चा, notorious child, कि it always moves in the opposite direction of the electric field as well as in the opposite direction of the करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो ऊपर की तरफ है, दैट मींस करंट जो होगा दैट कंस्टिट्यूट डाउनवर्ड्स. इसका मतलब फर्स्ट कंडक्टर में, दिस इज द फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज सेकंड कंडक्टर, तो फर्स्ट कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड्स होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. जबकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, करंट हैव द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बट हैज अपोजिट डायरेक्शन to the negatively charged particles. तो करंट की डायरेक्शन फर्स्ट कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होगी, जबकि करंट की डायरेक्शन सेम होगी सेकंड कंडक्टर में एज दैट ऑफ द प्रोटॉन्स. सो नाउ ये आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन में देखना है कि अब इनकी अपोजिट डायरेक्शन भी दी जा सकती थी, तो बच्चे क्या करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब फोर्सेस रिपेल कर रही होंगी, बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, उसकी वजह से करंट की डायरेक्शन तो सेम हो गई ना. In this case, they have same direction, but electron की opposite direction में current flow करेगा. In these conductors, current have the opposite direction. ठीक है, जो current की direction है, current direction is opposite in both the conductors. ठीक है, is opposite in both the conductors. So the forces क्या करेंगी, opposite direction में क्या करती हैं, दे रिपेल ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स होगी, उधर वो, दे फोर्सेस रिपेल ईच अदर. अंडरस्टूड? फोर्सेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. इफ इट इज आस्क्ड कि वी हैव टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, अगर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का दिया होता एंड अपोजिट डायरेक्शन दी होती, proton and alpha particle, they have same positive charge, matlab it is having twice the charge as that of it, but polarity तो same है, तो current की direction क्या होगी, they are moving in opposite direction, तो current की भी opposite direction होगी. यहाँ पे भी क्या होगा, forces repel each other.
अंडरस्टूड। यहाँ पे क्वेश्चन में कर क्या रहे थे, वो क्या था, प्रोटॉन्स एंड द अल्फा पार्टिकल्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे थे तो करंट की डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब अगर वो अपोजिट मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट होगी, देन फोर्सेस रिपेल ईच अदर। इफ इट मे बी आस्क्ड कि इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन मूव थ्रू टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स in opposite direction, then so the forces, two parallel current carrying conductors, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, प्रोटॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, प्रोटॉन की वजह से करंट जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है, करंट जाएगा ऊपर की तरफ। करंट हैव द सेम डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम होगी, देन फोर्सेस, करंट की डायरेक्शन सेम, दैट मीन्स फोर्सेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है ना, फोर्सेस अट्रैक्ट ईच अदर। So it is a very important concept. Both the concepts, both the forces that we discussed in this lecture, the force on a current carrying conductor ILV sin theta and force between two current carrying conductors F is equals to mu naught I1 I2 L upon 2 pi R. If the direction of current in both the parallel current carrying conductors is same, then the forces attract each other. If they have the opposite direction, then forces repel each other. So these are very important two concepts. The chances may be there that question may be asked in the exams, board exams, from these two topics. So with these two topics, we end today's lecture over here. Further topics we will discuss, or further forces we will discuss in the upcoming lectures. Okay.